आई थॉट कि यार मैं क्या बताऊंगा, पहले महीने में भी चेंज आती है, दूसरे महीने में भी चेंज आती है, तीसरे में भी आएगी, चौथी में भी आएगी, चेंज तो चलती रहती है. तो व्हाट शुड आई डिस्कस? सो when I came to think about it, I thought that I'll try to give you big pointers or certain ages where if a certain step has not been achieved, that's when it's a warning sign or a red flag. Okay? So we'll keep that in mind as we go. Now, in the talk, what I'll try to give you is a practical understanding of the progression of milestones in children. कि पहले उसने बैठना है, फिर उसने खड़े होना है, फिर उसने चलने शुरू करना है, फिर उसने सीढ़ियाँ चढ़नी है. And very important is to recognize important milestones which may identify children who may need some sort of intervention. कुछ चीज़ें, कुछ milestones, if a child does not achieve certain milestones, it may be because their hearing is not proper, it may be because that they have some limb abnormalities, it may be because of other reasons which if we intervene at the right time, the child may be actually normal. और अगर हम ना करें तो वो ठीक ठाक डेफिसिट में जा सकता है. ठीक है? And again, most importantly, to help in early detection in order to minimize disability and maximize quality of life. ठीक है जी? Now, the fun part about my presentation is you'll see a lot of baby pictures. ठीक है? And वो कहते हैं कि a picture says 1,000 words. So that's what I'll try to use. Okay? Now, in development, जब हम development की बात सोचते हैं तो all of us think अच्छा जी बच्चा कब बैठा था, कब चला था, that's all we think about. और बाकी चीज़ें हम नहीं सोचते कि अच्छा जी उसने छोटी चीज़ पकड़नी कब शुरू की थी, बोलना कब शुरू किया था, response देना कब शुरू किया था. So what we divide development into is actually 5 different categories. You have social and emotional development. You have movement, which is divided into 2. It's gross motor कि जी चलना फिरना, and fine motor, which is छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना. You have vision, you have hearing and speech, and you have cognitive, which is in older children कि जी बात उसको समझ कब आती है. ठीक है? और when can he actually understand 2-step commands? आप कहते हैं जी ये ग्लास टेबल पे रखो और फिर जाके बाहर से चीज़ लेके आओ. Can he actually understand that at this age? So why is developmental screening so important? If we do early intervention, children can be normal. सबसे पहली बात तो ये है. ठीक है? Next, children may actually just need hearing aids. A lot of children जो कहते हैं कि जी अब जी बोल नहीं पा रहा, ये बोलता नहीं है. A lot of them actually have hearing deficits. जब तक सुनेगा नहीं वो बोलेगा कैसे? ठीक है? Identify children who may benefit tremendously from speech therapy or physiotherapy. Physical therapy. Some children may have disabilities in their legs, and if they actually get some significant physical therapy, they may be able to walk with some assistance. वो हो सकते केन के साथ चल पड़े, हो सकते थोड़ी सी आलात के साथ चल सके. ठीक है? And if we don't identify, they may not need it. And again, to maximize quality of life and minimize disability. The reason why I put this slide up is to emphasize the point that there is a lot of overlap. बच्चा 9 माह में भी खड़ा हो सकता है और चलना शुरू कर सकता है. बच्चा 15 माह में भी चलना शुरू कर सकता है. Both may be normal. ठीक है? There's no one cut off. There's a lot of overlap. Maybe sits and stand anywhere in between this time. और आप देख रहे हैं overlap कितना है, कितना range है of normal. Now, let's just do a case scenario to just hammer in the importance. सुल्तान 18 माह का बच्चा है, माँ आती है कि जी चल नहीं पा रहा, अभी चला नहीं है डॉक्टर साहब. Are you concerned? Anyone? Yes? Okay. What is the normal age? 1 year? 14 months? Okay. Let's think about that. Where should we start in all of this? जब हम कोई disability को देखते हैं, where should we start? Anyone?
mode of delivery, so that comes in all your history findings, right? And so historical points are extremely important, and let me emphasize that. We start with our history. Family history, whether it is a family history of delayed walking. Maybe सारे बच्चे जी 14 माह में चले थे, कोई 9 माह में नहीं चला था. So it may be a normal variation. Other children with developmental delays, जी इसके दूसरे बच्चे को भी होता है. There may be a genetic disease which runs in the family, which is causing the children to walk at an older age. Social history, child abuse. हम अक्सर पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ का नाम नहीं सोचते, मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर. ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़, and it does have a very significant effect on the child's development, whether that's the social and emotional development, and it may actually interfere in other parts of the child's development. And of course, your prenatal history, your perinatal history, and your postnatal history. Now, what points in each of these are important? Okay, sure. Child abuse encompasses a lot of things. Child abuse may be physical abuse of the child. ठीक है. It may actually be ignoring the child. Neglected child. Neglect. True. Sure. Right, a neglected child, he may be neglected physically, he may be neglected emotionally, he may be neglected in any other ways, he may be put in a situation. A child abuse goes up to the extent, अगर आप उसको force करके कोई काम भी करवाते हैं ना, that may be considered into child abuse, but there's a very fine line. In the prenatal history, it's important to talk about drugs. It's important to talk about whether it's preeclampsia or toxemia, viral infections during the pregnancy. In your perinatal history, whether the child was born at with prematurity, low birth weight, whether there were any obstetric complications during the delivery. Neonatal history, whether there was a history of encephalitis, infections, severe bilirubinemia. Jaundice हो गया जी बच्चे को और उसका खून बदलना पड़ा. A very important point. Postnatal, again, injuries which may be non-accidental, again child abuse. ठीक है, हो सकता है वो गिरा है छत से, उसके बाद से जी अब चल नहीं पा रहा. Maybe there's a malaligned fracture which is now healed, and that's why he can't walk. Meningitis, encephalitis, failure to thrive. A lot of children in our country have third-degree malnutrition, and just the fact that they have third-degree malnutrition may be the reason why they are not growing or developing appropriately, as well as seizures. Now, coming back to our case scenario, Sultan, 18 माह का बच्चा, baby boy, mother complains that the child is not walking yet. There is a history of preterm delivery in this child, and the child was ventilated for 2 days. Again, a maternal male cousin with a learning disability. ठीक है? On examination, the child stands with legs crossed and on tiptoes. This is what the child looks like when he tries to walk or stand. Can anyone think what the diagnosis may be? Cerebral palsy, okay. Or actually, spastic diplegia, because his arms are fine, okay, but it's his lower limbs. So the importance of, now another point I want to raise here, अक्सर जब हम मरीज़ को देखते हैं ना और वालिदैन पूछते हैं डॉक्टर साहब अब क्या बनेगा इसका, हम कहते हैं नहीं पट्ठों की कमज़ोरी है, बच्चा ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा. But maybe that's not the right information to give the parent. Maybe the better information is to let them know this child actually ended up walking well with proper physiotherapy. He needs an assistance in walking. वो थोड़ा सा walker type की चीज़ इस्तेमाल करता है and can walk. Also remember that children with significant disability, if they're at least able to sit in a wheelchair, तो वालिदैन का या माँ बाप का काफ़ी काम हल्का हो जाता है, उठा के लेके जाके फिरना नहीं पड़ता. If you see older children with cerebral palsy, ठीक है, वो बड़े stiff होते हैं, लेटे रहते हैं या कुछ कर नहीं सकते और यहाँ तक कि इनके joints stiff हो जाते हैं. And for the parents to care for those children बड़ा मुश्किल होता है.
कोई कंधे के पीछे उठा के वहाँ NWFP में कंधे के पीछे उठा के लेके अस्पताल जा रहे हैं, ये घर में भी उनकी केयर बड़ी मुश्किल हो जाती है, जो उसको टर्न करें क्या करें. But if simple recommendations like physical therapy at the right age, ठीक है, making them at least enough physical therapy that they can sit in a wheelchair, maybe इनकी mobility बेहतर हो जाएगी. They can start interacting, and you would be surprised to know that many children actually may have physical disabilities, but mentally they're absolutely normal. They have a normal IQ level. They can feel, they can learn, they can do everything just like we do, but just they have a physical disability. So that's the importance of it. Okay, so it's important to recognize the limits of developmental milestones. अब इतना सारा कुछ होता है तो कहाँ से हम शुरू करें, है ना? So what we'll do is talk about the important milestones at certain ages, and you don't have to write any of this. Everything is in your handout, and in addition to in your handout, everything which I discuss here plus more, and you will have certain developmental watch signs. Developmental watch signs क्या है कि अगर इस उम्र तक बच्चे ने ये नहीं कर रहा, 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 तो आप इसको रेफर करें. बड़े क्लियरली आउटलाइंड बातें हैं कि अगर इस एज में इसने ये नहीं किया तो आप इसको प्लीज़ आगे रेफर करें. ऑल दोज वॉच साइंस एट दीज एजेस विल बी इन योर हैंड आउट, और हैंड आउट्स बन चुके हैं. ठीक है? Okay, so we'll talk about at 3 months, 7 months, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year and 5 year. So पहले साल में 3 महीने में और 7वें महीने में और फिर 1 साल में. We'll talk about that. ठीक है? Again, I put this slide up again because we'll be talking it in these different headings, under these different headings. So let's start about the 3 months age. So social and emotional development. He starts developing a social smile. ठीक है? He enjoys playing. He or she enjoys playing. Becomes expressive. तो ये सारी चीज़ें होती है 3 months में. In movement, he starts raising his head and chin while lying down. Opens and shuts his hand. Pushes down his leg. वो जैसे छलांगे नहीं मारते बच्चे, तो he can push down on his legs. Vision, he can start watching the face, माँ के चेहरे को देखता है. Follows moving objects, starts using hands and eyes in coordination. Hearing and speech, smiles at the sound of voice. Babbling, and turns head towards the direction of sound. Now इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, ये practically क्या देखें? Let's look at it. Okay. So what is the baby doing? Good. So the baby is smiling. He's actually becoming expressive. ठीक है? He's looking at the mother. ठीक है? Opening and closing of the hand. याद रखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप उंगली रखें तो खुद ही पकड़ लेता है. ठीक है? But in order to develop what we do, मैं चीज़ को पकड़ लेता हूँ, we have to learn to open and close our hands. So that's the first step in being able to learn कि जी मैं चीज़ कैसे उठाऊँगा. चीज़ उठाने से पहले उसको अपना हाथ खोलना सीखना पड़ता है. So that's what he's learning here. ये साउंड चला लीजिएगा. So he starts babbling, baby sounds, right? What is he doing over here? So he's using his hands, he's pushing his chest and head above. So अगर कोई चीज़ भी आपने याद रखना है 3 months पे, try to remember these pictures. And maybe you'll remember, हाँ जी, आपने अपने patients में क्या तस्वीरें देखनी है, या what do you expect them to look at like at 3 months of age. ठीक है? Not that difficult. Okay. Now let's think about 7 months पे क्या होता है. 7 months पे he's now enjoying the social smile more than before. Starts interested in mirror objects. शीशे में अपने आप को देख के मुस्कुराना शुरू करता है. ऐसे ही. Responds to others' emotions and is often joyful. काफ़ी खुश रहता है.
ठीक है, और जो दूसरा कोई कहता है किची 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 किची, वो भी हंसता है, ठीक है। मूवमेंट, ही स्टार्ट्स रोलिंग, अपने आप को टर्न कर लेता है। Sits with or without support at 7 months of age, even if they sit with support, that's fine. आप तो वो कहते हैं जी 6 माह में बच्चा बैठना चाहिए, अगर 7वें माह तक भी बच्चा सपोर्ट के साथ बैठ जाए, he's okay, maybe a little slower but he's okay. And he starts reaching for objects, और एक हाथ से दूसरे हाथ में, अब देखिए पैदाइश पे तो हर चीज़ को पकड़ लेता था, 3 माह पे अब पकड़ भी सकता है और खोल भी लेता है हाथ, अब एक हाथ से दूसरे हाथ तक लेके जा सकता है, ठीक है। विजन, नाउ he's developed full color vision. इससे पहले फुल कलर विजन नहीं होती बच्चों में, 6 माह के बाद अब इसको रंग बिरंगी चीज़ें पसंद आनी शुरू होती हैं। डिस्टेंस विजन मैच्योर्स, दूर से अब चीज़ को देख लेता है कि जी अच्छा कौन आ रहा है अंदर, या कोई चीज़ लटका देते हैं ना, या अक्सर आपने देखा है क्रिब्स के ऊपर वो ऐसे वो खिलौने से लटकाए होते हैं। He has the ability to track objects. Tracking का मतलब है कि अगर कोई मेरे आगे कोई चीज़ रख रहा है ना, तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा कहाँ जा रही है, ठीक है। Hearing and speech, he responds to his own name. मेरे बेटे का नाम अरसल है, तो अगर मैं अब अरसल कहता हूँ तो वो हाँ देखता है मेरी तरफ। Responds to no, no कहते हैं तो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। And expresses joy and displeasure. पहले तो यहाँ पे often तो खुश रहता है, मगर he can also express कि जी उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई। अब इतना सारा कुछ हुआ, let's look at the pictures. शीशी में देख के अपने आप को मज़ा करता है, he enjoys it. तो रंग बिरंगी चीज़ें अब देखना शुरू कर लेता है, starts interesting, full color vision develop हुई है, और is starting to sit on her own. Can track objects now, चीज़ों को पकड़ सकता है, can reach out for objects, ठीक है। So again at 7 months, if there's anything you want to remember, ये तस्वीरें याद करने की कोशिश करें, ठीक है, कि 7 माह में बच्चे ने चीज़ें भी पकड़नी शुरू करनी है, बैठना भी है, और शीशे में अपने आप को देखते रहना। ओके, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स बाय द एंड ऑफ 12 months, 1 साल की उम्र में। शाई एंड एंग्शियस विद स्ट्रेंजर्स, पहले तो हर एक के साथ खुश रहता था, अब कोई बाहर से कोई आदमी आ जाता है, या कोई चाची आ जाती है या चाचू आ जाते हैं जो आमतौर पर घर में नहीं होते, तो वो डरता है, वो पास ही नहीं जाता। आप कहते हैं नहीं नहीं आपके चाचू हैं, वो जाते ही नहीं, ठीक है ना। Doesn't go near strangers, and that's what we call stranger anxiety. वो जाता है, जाने की कोशिश ही नहीं करता। Cries when mother and father leaves. अब उसको पता है, whether it's mother, father or whoever is close to the child. दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, can be any of the caregivers, ठीक है। Tests the parental response to actions. बेटे ये ना करो, फिर उसने वही चीज़ करनी है, नहीं ये ना करो, फिर उसने वही चीज़ करनी है। So he's testing what your response to his actions are. Movement, reaches the sitting position without assistance. लेटा हुआ है ना, खुद ही उठ के बैठ जाएगा, पहले ये नहीं कर सकता था, पहले उसको बैठने में ही मसला होता था। Crawls on the belly, पेट के बल क्रॉलिंग कर लेता है। And pulls self to stand, चीज़ें पकड़ के खड़ा भी हो जाता है। Hand and finger skills, अगेन फुल कलर विजन डेवलप हो चुकी है, डिस्टेंस विजन मैच्योर्स, एंड एबिलिटी टू ट्रैक ऑब्जेक्ट्स, ये तकरीबन वही हैं जो पिछले हमने देखे हैं। स्पीच, नाउ स्टार्ट सेइंग दादा मामा, इंक्रीज्ड अटेंशन टू स्पीच, कोई बोल रहा होता है तो उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है, ऐसा आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं। सो लेट्स सी, इतना सारा कुछ, लेट्स सी हाउ वी कैन रिमेंबर इट। So starts crawling, ठीक है, पेड़ के बल he can start crawling, play करिए। ठीक है, so
At 12 years of age लोग कहते नहीं जी इसको कम से कम 3, 4, 5, 6 लफ्ज़ बोलने चाहिए. At 12 months of age, even if he says this much, he's okay. ठीक है? It's not behind. So you can see that he's crawling here. He's pulling himself to stand. And so if you want to remember developmental milestones at 1 year of age, just try to remember these pictures and this voice. ठीक है? Okay. Now, important milestones at the end of 2 years. पहले साल में बड़ा आसान था. तीसरे महीने में हमने देखना है कि क्या हुआ है. 7वें महीने में हमने देखना है क्या हुआ, और 1 साल की उम्र में देखना है क्या हुआ. बीच में there's a lot of transition period. ठीक है, उसने चीज़ें पकड़नी सीखनी है. ठीक है, उसने बड़ा कुछ सीखना है उतनी देर में. At 1 year of age, he should develop a pincer grasp. छोटी छोटी चीज़ें आपने देखा है कभी छोटे बच्चे जो 1 साल के करीब की उम्र होते हैं, उनको छोटा सा तिनका भी नज़र आ जाए नीचे तो वो उसको उठा लेते हैं. So their distance vision has matured and they started developing a pincer grasp. Yes? Sir, I hate to disturb you. It's a very important lecture. No, please. What I remember from my son's childhood is he was 3 months old, or maybe even before that. He started saying Baba, Abu, and Mama, Ammi, and we were going through the pediatric scripts, and we were not expecting all this, and he was saying that for getting attention, he was saying that on purpose. So, do you think this is some sort of premature development or something normal? Actually, I'm glad you asked the question. Many times, babbling maybe miss, वो क्योंकि हमें इतना शौक होता है अपने बच्चों के साथ ना, ठीक है, तो वो बाबा कह दिया इसने. नहीं, I'm not disagreeing with you. I'm not disagreeing with you. I'm just saying that this is one possibility. Whether your child has an extremely high IQ level, I don't know. But important to remember is we're talking about the normal development. There may be delays and there may be accelerated. जी जी सही सही. Okay. ठीक. Okay, so at 2 years of age, the child starts imitating behavior of others. ठीक है, दूसरे जो करते हैं वही बच्चा करता है. More excited about the company of others. दूसरों के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है. पहले तो वो खुद अकेले बैठ के खेलता था तो कोई मसला नहीं होता था. And demonstrates increasing independence. नहीं, मैंने पानी खुद ही पीना है, ग्लास खुद ही उठाना है, पानी खुद ही पीना है. Walks alone, starts kicking the ball, climbs up and down furniture unassisted. जी काउच पे चढ़ गया, बेड पे चढ़ गया, ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देता है. Hand and finger skills, scribbles. Builds towers of 4 blocks. अगर आप उसको blocks दे तो वो एक दूसरे के ऊपर रख लेता है 4 तक. Now uses one hand more than the other. अब पता लगता है कि यार ये left handed है, ये right handed है. माँ बाप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये right handed है या left handed है. At least मेरे से तो काफ़ी पूछते हैं. I say wait. 2 साल की उम्र में या 2 साल के एंड पे जाके पता लगेगा कि ये क्या कर रहा है. जी. Remember, this is a range. कुछ चीज़ों में ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, कुछ चीज़ों में कम होगी. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है बच्चा ये सोशल और इमोशनल सारा कुछ कर ले, मूवमेंट सारा कुछ कर ले, मगर हैंड एंड फिंगर स्किल्स अभी पूरे नहीं हुए. दैट्स फाइन, दैट्स नॉर्मल. He can be normal. But again, in your handouts, you have developmental watch signs. ठीक है, हेडिंग है पूरी developmental watch signs. Those are things कि अगर उस एज में बच्चे ने नहीं अचीव किए ना तो आपको रेफर करना चाहिए उस बच्चे को. ठीक है, okay. Language starts saying several single words, 2 or 4 word sentences. पानी दे दो, 2 word sentence. ठीक है, या मम चाहिए, 2 word sentence. That's fine. And start saying phrases. Okay. Now, let's see. So what's the child doing? He's imitating what other people do. Okay. So he's seeing कि अच्छा दूसरे बच्चे क्या करते हैं, sorry बड़े क्या करते हैं तो मैं क्या करूं. Starts climbing furniture. Starts scribbling. ठीक है, ऐसे पेन पकड़ के
करना पड़ता है. Start showing interest in others. दूसरे बच्चों के साथ start showing interest. Starts kicking a ball. Builds a tower of 4 blocks. ठीक है, तो अगर 2 साल के बारे में आपने सोचना है तो ये तस्वीर आपने ज़हन में रखनी है. ओके, क्योंकि आज जुम्मा है और ऊपर से लंच भी है, तो आई एम गोइंग अ लिटिल मोर क्विकर देन आई वुड यूजुअली. ओके, सो प्लीज़ बेयर विद मी. नाउ एट 3 years अब आके हम कॉग्निटिव भी सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा बच्चा सोचता क्या है. Can he think properly or does he do things properly? Because remember one thing, autism का लफ्ज़ किसी ने सुना है पहले? Okay, autism is a very common developmental disorder in pediatrics. It's one of the most common developmental disorders in pediatrics, and it is signified by this loss of certain milestones. ठीक है? And odd methods of playing. तो मसलन एक गाड़ी है, बजाय उसको गाड़ी चलाने का, ठीक है, he uses it to throw as a ball or something else. So important to think about when you think about cognitive. So he can take turns in games. He understands the concept कि जी मेरी क्या चीज़ है, उसकी क्या चीज़ है. Expresses affection openly. हर एक को चुम्मियाँ देता है. Separates from parents easily. अब आप उसको प्ले स्कूल में भेज सकते हैं, अब उसको आपकी दादी के साथ भिजवा सकते हैं, किसी के साथ भिजवा सकते हैं. Cognitive, he starts playing make believe with dolls or animals and sorts objects by color and shape. जी अगर ये triangle है तो triangle वाले डब्बे में डाल देना है, अगर ये square है square वाले डब्बे में डाल देना है. Movement, he starts climbing well. He walks up and down stairs alternating feet. पहले जब बच्चे सीखते ना stairs कैसे चढ़ने, तो एक पैर रख के फिर ऐसे. So that's not alternating feet. Alternating feet is when they can do this, right? And that's when they can start learning how to walk. And pedals a tricycle. जी अपनी साइकिल चलाना शुरू कर लेते हैं. Language, now he can say कि जी मेरा नाम क्या है, एज मेरी कितनी है, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ. He can say 4 to 5 word sentences and recognizes common objects. ठीक है जी, ये ग्लास है, ये प्लेट है, ये गाड़ी है, stuff like that. Hand and finger skills. Now he can start making shapes. पहले तो वो scribble करता था ना. Now he can make up and down lines, sideways lines. He can draw a circle. Okay, and he can turn pages of a book. किताब के सफ़े पलट सकता है. Many children learn much well before this age, but at this age this should be there, and can build towers of 6 blocks. So, साइकिल चला सकता है, shows affection openly, plays make believe कि जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको चेक करना है. Can turn pages of a book, can draw straight lines either sideways or upwards, can draw circles, can actually make a bridge with blocks, or make a tower of 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So पहले tower of 4 blocks था. 1 year ago, now you can make a tower of 6 blocks. So at 3 years of age, if you see this, that's normal. Now just 2 more years left, so we're almost there. ठीक है? Now at 4 years of age, can cooperate with other children. कपड़े पहन सकता है, कपड़े उतार सकता है, and that's the best age. That's why they send children to school at this age. ठीक है, पहले प्री स्कूल होता है और मॉन्टेसोरी होता है और इतना सारा कुछ, ये किसी वजह से होता है. अब वो किसी बच्चे को डराना कहता है बहू आ जाएगा. अब उसको समझ आती है कि जी बहू क्या चीज़ है, ठीक है, ये चुड़ैल आ जाएगी. अब उसको समझ आ रही है कि ये चुड़ैल क्या है. Cognitive, he can name colors, may count a few numbers, यानी 1, 2, 3 तक कर सकता है. Movement, he can hop on one foot, throws a ball overhand, catches the ball most of the time, catch कर लेता है. Language, he speaks 5 to 6 words, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाने शुरू कर देते हैं बच्चे. ठीक है. Speaks clear enough that others can actually understand them. कि जी अपने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता कि सिर्फ माँ बाप को समझ आए कि जी बच्चा क्या कह रहा है. Can copy squares. So पहले scribble था, फिर circle हुआ, now square.
ठीक है, uses scissors and can draw a person with 2 to 4 body parts. Now let's look at the pictures. So that's the person with 2 to 4 body parts. ठीक है, वो बेशक अगर आप उसको कहेंगे जी बच्चा बनाओ, उसने शक्ल बनाई और 2 बाजू बना दिए, that's fine. ठीक है, ये सिर्फ 2 टांगे बना दिए, that's fine at this age. कपड़े पहनना शुरू कर लेते हैं. Can start hopping on 1 foot. ठीक है, cooperates with other children. दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद में लग जाते हैं. Can throw and catch a ball overhand. ठीक है, एक तो ऐसे बच्चे बॉल फेंकते हैं ना, दिस इज थ्रोइंग ओवरहैंड. कैन यूज सिजर्स, कैन ड्रॉ अ स्क्वायर. Yep, that's something. Now at 5 years of age, this is the last age where we really monitor growth parameters well. Okay, so you look at the social and emotional. Now he wants to please friends. जो दूसरे बच्चे कहते हैं वो उन्होंने वही करना है. ठीक है कि जी उसने ये कहा था तो मैंने भी यही करना है. Likes to sing and dance and is now aware कि हाँ जी लड़की असल में क्या होती है, लड़का असल में क्या होता है. So now they're aware of that. Can count 10 to more objects. इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा कह दे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नहीं, This means that अगर 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं ना उसके सामने, वो कह सकता है 1 2 3 4, ये 4 है, and can count up to 10 objects. ठीक है, नेम 4 कलर्स कि जी ये येलो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ऐसे. मूवमेंट, हॉप्स, ठीक है वो हॉप कर सकता है, स्विंग कर सकता है, स्किपिंग शायद बच्चा कर पाए 5 इयर्स के एज पे. लैंग्वेज, अब स्टोरीज याद करता है, पहले पिछले उम्र में अपनी स्टोरीज बना लेता था, इसको याद नहीं रहती थी कि कौन सी स्टोरी थी, अब वो स्टोरीज याद करता है. ही रिकॉल स्टोरीज. अब अपना नाम और एड्रेस बता सकता है कि जी मैं यहाँ रहता हूँ. कॉपीज ट्रायंगल्स, सो पहले स्क्रिबलिंग थी, लाइंस थी, सर्कल था, स्क्वायर आ गया. नाउ यू कैन मेक ट्रायंगल्स. कैन ड्रॉ अ फुल पर्सन एंड कैन यूज अ फोर्क एंड स्पून नीटली. ठीक है, ओके लेट्स लुक एट द पिक्चर्स. सो ये पर्सन आ गया. कैन स्टार्ट स्किपिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग. ठीक है, बच्चे कर लेते हैं. कैन रिमेंबर 4 कलर्स. Can count 10 objects. Can draw a triangle. ठीक है? So at 5 years, this is what you want to think about. So my important message is learn the science. आसान नहीं होता. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम सारी चीज़ें याद आएंगी. But if you remember the pictures, and that's why I try to my best to put as many pictures in this as possible. Because if you remember the pictures at specific ages, then you'll remember कि हाँ जी ये normal था, ये abnormal है, बाकी आपके पास handout है. ठीक है, and you'll be able to identify things. So learn the science and act early. So, छोटा सा quiz. How old am I? कितनी उम्र है? Someone said 5, someone said 4. A child learns to throw overhand at 4 years of age, right? Okay. How old am I? 1 year? 3 months. 3 months. Sorry. This is 7? You sure? तस्वीरें याद करें. 3 months. Can actually push himself off the bed. ठीक है? Can start pushing himself off the bed. How old am I? 2 years. कर क्या रहा है? Imitating what others do. This is at 2 years. ठीक है? So in summary, remember development is a gradual process. अगर वो बैठेगा नहीं तो वो चलेगा नहीं. ठीक है? अगर वो चीज़ों को छोड़ नहीं पाएगा तो वो चीज़ों को पकड़ भी नहीं सकेगा. ठीक है? Important to recognize early warning signs. ठीक है, जो ये वार्निंग साइंस है, अच्छा अभी 3 माह का है और ये नहीं कर पा रहा, वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर दैट एंड आइडेंटिफाई इट एंड रेफर क्विकली. ठीक है,
early referral and learn the signs and act early. But some children don't crawl or walk. Sorry? Some children don't crawl. Oh, that's absolutely normal. Many children don't crawl and they go straight to walking, और वो कभी crawl ही नहीं करते. कुछ बच्चे crawl करते हैं मगर वो लंगड़ा के जी एक ही पैर वो थोड़ा सा push करते हैं. That's all normal. But as long as they do those milestones in sequence and they go, बीच में कई milestones miss कर जाते हैं बच्चे. But that's okay. But it's important to recognize that. And my last message, help keep us smiling. Remember, just because you have a developmental disability doesn't mean you have कुछ भी नहीं कर पाते. You can have a hearing aid and be absolutely normal. You can be in a wheelchair and children can enjoy themselves. ये जो Special Olympics अभी हुए थे कराची में कुछ ही अर्सा पहले, a lot of children participated in it, and you would be surprised उनके चेहरे की रौनक देखने वाली होती है. And if you ever deal with parents who have a disabled child, honestly मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, and sometimes it surprises me as well, कि माँ जो होती है ना वो माँ होती है और बाप होता है. वो बच्चा चाहे वो डेवलपमेंटली डिसेबल्ड है, बच्चा चाहे कुछ भी नहीं कर सकता है ना, जो प्यार माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं ना उसका कोई मुकाबला नहीं है. And the important thing is for you to help them with this process. वो कभी ये नहीं कहेंगे जी बच्चा मारी जाए तो चंगा है, नहीं. वो कहेंगे नहीं चलो जो कुछ भी है मैं करूँगी तो है, करूँगी ज़रूर. And so help keep us smiling. Thank you. Yes, please.